Okay, very good morning and welcome our research persons, Mr. Oiro Kharabala Porida, Assistant Professor at VJB Autonomous College, and dear learners, welcome and good morning. Today we are start. Our topic is Internet and Social Media Information Technology for Business. That is Block 3. I request research person sir, Oiro Kharabala Porida, please start today our session. Welcome and thank you. Please start. Thank you. Thank you very much, sir. And welcome all to this session. Now, we have the topic of internet and social media. I think all of the learners must aware regarding the social media and a little bit of things that I will show you regarding the social media and the internet. Okay. Can the presentation visible to everybody? Can it be visible? Yes. Okay. Thank you very much. Yes, sir, visible and audible. Yes. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now, as our topic is the internet and social media. Okay. Please start. Okay, sir. I am starting. And we must know regarding internet, right? Now, what is internet and how internet helps us doing the things, not only for the social media but also other things. We will be discussing later on one step by step. Now, basically, thing is that what is internet? We have to know that. Now, internet basically, if we understand in a layman's language, now it is a highway. Highway means the way through which lots of vehicles are moving. Here in internet, it is a virtual way through where lots of things are moving, and inside the lots of things, there may be any social media, there may be any website, there may be other things, chat or Twitter. Lots of things are going on there in the internet. Now, think is that how internet works. Internet works upon certain protocols, and the basic requirement of the internet is the TCP/IP protocol. Now, what is TCP? Here I am mentioning the TCP/IP, right? Now, what is TCP/IP? TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, and the IP stands for Internet Protocol. Now, as we are connected with internet, our device has automatically assigned an address. As like we are staying at our home and we have an address, as like same thing, our computer has an address, and the address is a numerical address. And numerical address means it is an IP address, but we know in a generalized version it is an IP address. Now, IP address is nothing but the virtual address assigned to your computer. Whenever you are connected your computer to the internet, it automatically gives an address. And here an example of IP address, which is the IPv4 example type. Now, IP has two types. One is IPv4 and another one is IPv6. Now, it is an example here in the first and the fourth pointer. You have seen that one example of IPv4 address type, that is 110.22.33.114. This is an IPv4 type of address. Now, question arises, whenever we are searching any site, it is very easy for us to remember the site name and doing that. Also, that particular site has also an IP address. Now, if I provide you the digital version or the numerical version of any website, now it is very difficult for us to know that or to remember that. For that site, what we do, we just give it a character type of thing and put it into our browser so that we can easily access it and easily remember it. Now, same thing, a special type of computer name that is the DNS, domain name server. It is that type of thing which allows us to remember the things very easily, and
put it into the URL so that we can access the internet or access the website in very efficient manner. Now, next, it is the basic information regarding the internet. Now, coming on to the evolution. Now, when and how the internet has been evoluted. Now, in the year of 1969, it is first the small internet was developed, and it is basically for the army purpose, developed by the US Army, and it is known as the Advanced Research Project Agency Network, which is short formly abbreviated as ARPANET, and gradually it is initiated and with a small node of computer, and gradually the number of nodes has been increased, and gradually the evolution of computer has increased, and today where we are, this is the current scenario of internet. Now, initially when the ARPANET was developed, there was no TCP/IP. So gradually the TCP/IP was developed, then DNS was developed, then www was developed, then browser was developed. Lots of things are gradually step by step, according our requirement we develop the thing, and accordingly we use that thing for our day-to-day life purpose. Now, if we are using internet, now there may be some advantages and there may be some disadvantages. Now question arises, what are the advantages and what are the disadvantages? Now can we adopt the thing by knowing the disadvantages, or can we adopt the thing by knowing its advantages? Now thing is that everything has its advantages and disadvantages. If you are using in proper manner, then you will find the advantages of a particular thing. If you are using that in a destructive way, that may be the disadvantage. Like advantages, lots of things, what you are doing in the internet is a type of advantage kind of thing. Now one example of disadvantage I am telling to you, that lots of hackers are there inside in our world. What they do, they just want how to earn easy money. Now the internet is the best way to earn the easy money. Now the thing is that how they are doing that. Now this is the biggest disadvantage of internet if you are not aware of this thing. Now disadvantage, one of the disadvantages, somebody send you a link. It may be through your text message, it may be through your mail, and if you click upon that link, then all the files, all the hidden things of your computer can be visible to someone else to whom you are not want to share. Now this is the biggest disadvantages of internet. Now the user must have know what to do, what not to do. If that thing the user knows, then he is in safe side. If don't know, then he or she might be in danger. Right? Now one of the advantages, I am telling you one after another the advantages. Now advantage is you are using internet for mailing purpose, you are using internet for your social networking, you are using your internet for sharing the messages, you are using the internet for sharing your videos, sharing your songs, sharing your images. Lots of things you can do by the internet, by sitting here and sharing the things remotely present to your friend. And the disadvantage, what I am saying, the disadvantage, spam messages, viruses, lots of things are there. Now those things you must be aware of that thing. Now this is a vast thing of disadvantage, the spam and the viruses and the hackers, and for that reason there are lots of courses available inside the market, and I think OSU is running cyber security course, and that cyber security gives the idea regarding how you can be in safe place wherever you are using your internet. Right? Now coming to the internet services. What are the services that internet gives us? Now, this is the simple chart, the services, internet services, communication services, then second one is the information retrieval services, web services, and the World Wide Web. Now, communication services. Communication services means, for example, let's say you are an entrepreneur and you have lots of subordinates. You want to communicate that the today's work position is this, and the job should be done within this deadline. Now what we will do?
single by single, if you call the persons and tell them this is the thing you have to, this is the deadline, you are doing this within this deadline. Now it is very difficult to let them know by one. Now you have running short of time. So for that purpose, what we do now, it is type of the broadcasting type of thing. Let's say, for example, if you have a WhatsApp group, and in that WhatsApp group, you have all the employees inside the WhatsApp group. As a boss of that company, you just send a message inside the WhatsApp group, all will get it, and it saves your time, it saves your effort, and the employees know the thing what the boss wants. So they accordingly do the job. Now, second thing is the information retrieval services. Now, information retrieval services, the best example, all of you are using the Facebook. Now, Facebook, currently you are using Facebook for watching video, watching to know the information, and to know what thing going on, real-time information you are also getting there. So, for that thing, you are receiving the information. For example, the current scenario is the number of COVID cases in which state you want to know. Let's say you are not watching the television, you are watching, you are seeing your Facebook. Now the Facebook live will give you the detailed information. So you are receiving the information also. Now web services is the thing where the websites are to be hosted. Like just like your OSU website is hosted. Now that is a kind of web service. Now you are accessing the web services of your OSU website and downloading the resource, and you are reading it, then appearing the exam. If you don't have the physical copy of that particular content. Now coming to the World Wide Web. This is the vast and important thing. The World Wide Web. The World Wide Web is the best or the one of the important content of the internet, where all the websites are being stored. Now, whenever you are writing an URL, inside the URL you are providing the www. The total URL is http://www.google.com. Now, that www is an important content. Now, inside that www, you are resides all of the websites. World ଯେତେକ website ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସେ www under ହିଁ କାମ କରନ୍ତି. Without that www, no website will work. Now, these are the basic services and the gist of that services that internet provides to us. Now, coming to the connectivity. Now, how you are connected with your internet? Now, all of you have the Jio SIM inside your mobile phone, or the broadband connection with your landline phone, or direct broadband connection to your computer. You are using that. Now, seeing at internet, you don't feel that how the internet has been connected. The technician comes to at home, connects your computer to the internet, you just enjoy the internet. That's it. But think that how, as a technical person, if something happened to my internet connectivity, can I able to resolve it? ମୁଁ ତାକୁ solve କରିପାରିବି ନା କରିପାରିବି? That's the main objective. So for solving that, you must have know what type of internet connection are and how many types of internet connection are. The first one is the dial-up connection. Now, guys, now today's time is the 4G type of internet connectivity. Now, previously it was 3G type of connectivity, and then previously it was the 2G type of connectivity. Basically, the dial-up connection is the older type of connection which allows your device, mobile device or your computer device, to connect with the internet by using a mobile phone. Now here, let's say this is your mobile phone, and there is a 2G kind of chip, and you want to connect the mobile phone to your device. Now what you do? First thing, you have your computer, a software is there for the dial-up connection. Now that dial-up connection, that will require a number. Now dialing a number, you will connect to a person, as like dialing a particular number of a particular operator, you will connect to the internet portal of that particular company. For example, if you are using BSNL SIM, then it might be, I don't remember the exact number, but it is the #99* I think. And if you are using Airtel, there may be another number. If you are using your Vodafone, that is another kind of thing. So you have to know that dial-up number. Now, whenever you are providing the dial-up number inside a particular box and click the dial button, your internet connectivity will be established.
And for that internet connectivity, your mobile device should be connected to your PC via a Bluetooth. It is very much required. It may be a Bluetooth or it may be a wire connection like a data cable. It is very much required to connect with the internet. Now here what happens? Your mobile device is acted like as a modem. Now question arises, what is a modem? Modem is nothing but a modulator and demodulator. Now modulator, what is modulator? Now the device what we are using nowadays all are the digital devices, and the signal what we are transferring are the analog kind of signal. Now the digital device and the analog signal, both two are not support with each other. These are capable devices and support କରିପାରିବେ ନାହିଁ. Now for that reason what we will do? We just put a device in between them which can convert the analog to digital signal and the digital signal to analog signal. Now what happens when you are accessing the internet, the signal is coming as an analog signal. Now it hits your modem and your modem converts it into digital form and gives it to your computer or other device or laptop or whatever it may be. Now whenever you are giving something to another computer, now the digital data is generated in your computer. Now the digital data is going to the modem. Now the modem converts it into analog signal and the signal is transmitted over network. Now this thing happens while we are using the modem. Now this modem what you are currently using at your home or at your offices, same thing has been done. The characteristics of modem don't change. Because you see nowadays it is very difficult for us to transmit the digital signal. So we are transmitting the analog signal. And if we are transmitting the analog signal, means we must have with the modem in between the digital and analog. Now second one is the ISDN, Integrated Service Digital Network. Now this is the type of the diagram. Look at this diagram. Now Integrated Service Digital Network. Consider if somebody has the broadband connection at their home. Now that inside that broadband communication connection, they can talk, they can easily access the internet, and sometimes currently what happens now television signals are there embedded within them. Now when lots of things, multiple things are integrated within a single cable, now we call it a digital service digital network. Now as the things are going on, now see here the computer, remote computer is situated. Now you have the ISDN adapter. Now the ISDN adapter gives the internet connection to the internet. Now from the internet you are going to another device which is a second computer. Now these things are doing by multiple purpose. Multiple purpose means you are calling to your friend, you are accessing the internet, all things can be done. But inside the dial-up connection, whenever there is a call in your mobile phone, the connection will be disconnected. Your internet connection will be disconnected. But here in Integrated Service Digital Network, you can easily call somebody while you are using the internet. That is the benefit of the ISDN. Now the third one is digital subscriber line. Now the digital subscriber line gives us the here you can see the multiple computer 1, 2, 3. Now another thing is the router. Now after that the modem is there. Now guys, tell me, let me tell you the working function or principle of router. Now before that, try to understand one thing. What happened if you are sending a message to me or from your end to your friend's end? Let's say you are sending, "Hi friend, how are you?" Now this is a text type of thing or character type of thing what you are typing at your computer. Now same thing is not transmitted over the network. Now network कौन करे? Now the character of whatever you are typing, those are converted into binary. Now question is how the character A, B, C, D is converted into binary. Binary means 0 and 1. This is the digital format. Now A, B, C, how it is converted to 0, 1, 0, 1, 0, 1? Now a standard is there, ASCII standard.
Now A, B, capital A, capital B, capital C, small a, small b, small c, all have the ASCII code. ASCII code means decimal number. Decimal number means दो number साथ हम acquainted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ये बड़ा होता है हमारा decimal number. Now those ABC is converted into the decimal number, and again that decimal number is converted into binary code, which is a 0. Now the technique is there. Okay. Now the binary code being transmitted to the internet. Now the binary directly is not transmitted to the internet. Now what happens? The binary things have been closed inside the package, and the package contains the address of the receiver, the address of the source, along with the data. And जैसे सब तुम्हें लिखित जो hi friend, how are you, all are not bounded in a single packet. Multiple packets can be there. So four things are there. One is your sender's address, one is your receiver's address, one is the packet number, and another one is the data. Four things embedded inside a single packet, and the packet has been transmitted to internet. Now let's say your message has been divided into 10 packets. Now 10 packets means 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. So these are the 10 packets. Now those 10 packets can be transmitted in haphazard manner. That does not mean that one is transmitted first, then second, then third, then fourth, then fifth. No, not like that. They are transmitted haphazardly. That means 9 number packets can be transmitted first, then 8 number, then 1 number, then 3rd number, likewise. Now what happened at the receiver send? Receiver send, there is a modem. That modem is converted the digital to the analog form. Now the packet has been opened. Now when the packet has been opened, when all the packets like 1 to 10 packets has been received by the receiver, then only the packet has been opened. If one packet has been lost, what will happen? Now an algorithm is running which asks the sender to resend again that packet. Now the sender, as a sender of that message, you are not being asked. Your computer will do that. You don't take any care of that thing whether packet is lost or packet is arrived. So your computer will take care of that thing, and the lost packet has been again sent. Now what happened? Now which direction? Now for example, if you are starting at a particular place and want to receive at a particular place, and there may be lots of ways. Who rasta rejibo so that you will reach in a small little bit of lesser time, and do ki traffic कम थिबो, and do ki easy driving हो थिबो, तो सेही रूट को तुम फॉलो कर. Now accordingly ये पैकेट भी शेयर करे. से पैकेट शेयर करिया तो ताको किए के ना, this is the purpose of the router. The router's job is to give the route to the packet where the less traffic is available, and they receive the receiver's end. Now again the receiver's end, when all the packet has been received, all are open, and 1, 2, 3, 4 simultaneously they are serially arranged. Again the digital format, it will be converted into ASCII code, which is the decimal code. Again the decimal code is converted into the character, and those characters have been seen by the receiver. These things have been done. Now the digital subscriber line, this is the best part of the DSL, that the use of the router gives you the speed of the internet, so that the packet will get the proper way to transmit. That is the best part of the DSL. Now this is the fourth type, is the cable TV internet connectivity. Now all of you have known that televisions are coming with the Android operating system, where you can watch the television, where you can visit the website, all sorts of things, where you can also play the game, all sorts of things you can do. Now what happened, you might have seen that inside the Bhubaneswar, Jio has their cable line. Inside that cable line, they are giving the internet as well as the TV connectivity. Now this is the cable TV internet connection. The best example होती Jio रो जो cable TV आती है. I think किसी जगह connection है ना, किसी जगह connection है नहीं. Whenever you get it, you will find the concept, how the things have been done. There is a machine which is called the splitter. The splitter, when you assemble that splitter, that will give one connection to your computer and another connection to your TV. And again, if your TV is Android enabled and can be accessed
the internet can be accessible by the internet, then you can do all sorts of things by using your television. Now television are also smart. Previously television was not smart. Now currently the television are very smart. Now accordingly you are using the television, you are using the internet, all sorts of things you can do by using the internet by the cable TV. Okay. Now come to the internet collaboration overview. Internet collaboration overview. The first point is online chatting. Now, it is very familiar term, the online chatting. All of you are doing this in this lockdown. All are doing the WhatsApp, all are doing the Facebook Messenger, and all are doing, if you have the Snapchat, then you are also using that. Now, chatting is what you can say, it have some advantages, it may have some disadvantages, and it is a habit kind of thing that if I am using the phone means chatting. Okay. Now, typing the character in your mobile phone is very difficult sometimes. Now, what we do? Now, your phone is very smart. What you are talking to your phone, the phone converts it into text. Now, the text has been sent to the internet. Now, this is the best part. The softwares are enabled the internet users very user friendly, so that they can use the internet in a rapid manner, and typing making us very lazy. That means if I am saying hi friend, how are you, just I am enabling the speaker, then I am telling hi friend, how are you, then the message has been typed, just I have to put the enter signal and it is transmitted to my friend. And again, whenever you are chatting, now lots of merit and demerits are there. Now merit and demerit, you can give the chat equity inside that what you do, what you need not to do. So these things you need not to do whenever you are chatting with somebody, right? Now these are the किसी chat है जोटा कि आमे माने app download करो, just like your WhatsApp. WhatsApp initially जेतेबेले आसिला, that app is not web based app. That is a just app whatever you are using inside your mobile phone and doing the chatting. Now after that, the web version of WhatsApp is coming. Now all of you know how to connect the WhatsApp to your web. If you don't have the mobile WhatsApp, then it is very difficult to find it in the web. Now similarly, the web-based chat best example is Google. Your Facebook. Facebook, you have the Facebook Messenger. Facebook Messenger gives you the idea regarding sending the videos, sending the text, sending the photograph, all of things you can send to your Facebook Messenger. Like all other things, here I am giving eBuddy, Converse, Medium. You may not be familiar with this, but yes, these are available in market. If you search in Google, you will find this, right? These are the web-based chat services. Now coming to the instant messaging IM. Instant messaging IM, now you have we are having the session in the Google Talk, Google Meet site. So Google Meet have another software, that is the Google Talk, where it gives you the benefit not to wait for somebody and again you give the idea. It is only the thing you instantly send the messages. That's why it is coming under the instant messaging. Now again, another thing is the Twitter. Now Twitter is a kind of thing where you can be allowed to send the messages like your text messages you are sending in your mobile phone, 140 characters at a time. Now same thing in Twitter allows you to send 140 characters. You can send more than that also, but basically it restricts you to send 140, and you can send more also, more over 140 characters. And question arises, why not it being possible before the time when I mean sometimes back, some years back, why is it possible nowadays? Now for that reason there must be some infrastructure required. Infrastructure requirement means there must be some internet
infrastructure which support this kind of web portal, this kind of social media platforms to enable us to go through that website. Now, we have earlier, whenever we were using the 2G services, it was the web 2.1. Sorry, web 1.0. Sorry, web 1.0. That web 1.0 restricts us not to use this kind of things. Now, whenever it is developed the web 2.0, it gives us the platform to use the smartphone inside the internet world. Now, currently we are at web 3.0, which allows us more than that. So it may be the 5G whenever it will come, you will find more facilities in internet to chat with your friends, more flexibility, more adaptability, and more AI-enabled software can be available. Now, basically, Web 2.0 gives you the platform to use the social media tools. But the thing is that those social media tools are beforely not used in the Web 1.0, but 2.0 gives us that platform. Now, question arises: why should we care? Can be vast or can be can let the people know through this platform. चिंता जदि मत पैंडेमिक होची ताले जो न्यूज रिपोर्टर अछन कलेक्शन करे सर ठीक है वॉइस टा कम सुबिला होइरो सर लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन. Hello. हेलो Okay. सर हाँ परेड़ा सर टिके वॉइस टा टिके कम सुबिला तो आगे आगे ना सेतेबेले कोन हेतला कि सर Okay, एते okay. कॉल गुडा आछला कि ओके सर नाउ आई एम okay. Now, sir, Okay. now why should we care for the web media or the social media? Now, this is the best example. There are over 100 millions worldwide viewers per day of the YouTube. YouTube को 100 million अधिक लोग watch करछन्ती. There are 350 million people on the Facebook. मैंने per year, previous last year, 10 billion of tweets are there in Twitter. And basic thing is, the fastest growing Facebook segment, मैंने जो segment of people बेसी use करते हैं Facebook को, that is, it is a study of some years, 2 years back, 35 to 54 age रो लोग बेसी use करते हैं. That does not mean that the age of 5, 6 to 35 are not using, also using. But काहे के ग्रुप को लेकिन या पर स्लाइड I will tell regarding that. And you can expand your business by using this social media. Now, nearly 3 in 4 people participate in at least one online community or social media. 4 जन ରୁ 3 जन लोक minimum ଥିବେ social media. Now, 1 in 6, that is the 16%, have used social media to get information about the emergency. Now, this is the emergency situation, that the corona situation. मैंने टीवी रे किछि दउनी ए रिपीट टेलिकाशन बहुत लोक कोन करते ना टीवी को रिचार्ज करनो छै जो टाटा स्काई कार्ड अछि कि डिश टीवी कार्ड अछि रिचार्ज करनो फॉर सेव द मनी. Now, from where they are getting the information? By using the social media, they are getting the information. Now, the point, the way business is being done, this point, and the fastest growing, the age limit 35 to 54. Now, the decision taking capacity of a family belongs to this age group 35 to 54, generally.
Now if you hit this kind of people for doing your business, then your business will grow. Now ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଆସି ଥରେ କହିଦେଇ ଗଲା କି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲାନି, ତାପରେ ତମେ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ବଦରିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର 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 ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଲେଟ୍ସ ଭିଜିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଟ୍। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ର ଲେଟ୍ସ Ajio.com ର ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଇକି ତାର 80% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଥରେ ଆସିଲା ଇଗ୍ନୋର କରିଗଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଇଗ୍ନୋର କରିଗଲେ, ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଇଗ୍ନୋର କରିଗଲେ। ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇଗ୍ନୋର? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ଦେଉଛି Ajio, ନା ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ତା ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ନା ଯେତେ ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ନିକ୍। ଏଟାକୁ ବସିକି କେହି ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏନାବଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେ ହାଭ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍କୁ ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୟା ଫିର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଏସବୁକୁ ହିଟ୍ କରେ। ହିଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ଏଇ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ ବଢ଼େଇବାରେ ଚାହିଁବେ। ଏଗେନ୍ ଥରେ ଆପଣ ମୁଭ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଗେନ୍ ଫେର୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ୟୁ। 10 ଥର 15 ଥର 20 ଥର ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଥର ଗୋଟେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଟ୍ସ ବାୟ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ନା ଆପଣମାନେ ମାସେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣି ବି ପାରିନଥାନ୍ତେ କି କିଣି ନଥାନ୍ତେ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲ ବିଜନେସ୍ they are doing with us. So that's why social media plays an important role in business. Now, next thing is why government is using social media. Now, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋରୋନା ଭାଇରସ ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ଯିଏ ଥିଲେ COVID-19 ର ହେଡ୍, ସିଏ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଇଭିନିଂରେ 4ଟାରୁ 5ଟା ନା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଯାଉଥିଲା। ନା ଯେତେବେଳେ କୋରୋନାଟା ଟିକେ ଅପଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା ନା ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ନା ଆମେ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ୟା ଫିର କୌଣସି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବୁ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନା ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟେଲିକାଷ୍ଟ କଲେ। ଏଗେନ୍ ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହାଜ୍ ଦେୟାର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଲସୋ। ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ବି ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ସେଗମେଣ୍ଟ କରିକି ଭାଗ କରିକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଡିଭାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହି ଇଜ୍ ଟେଲିଂ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ 5 minutes or 6 minutes। ତ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପକାଇଦେଲେ। ନା ସେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେନ୍ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକି ନମ୍ବର COVID-19 ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ଭିତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଡେଟା ଅଲ୍ ଡାଟା ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେୟାର୍ଡ। ତ ସେଇ ଡାଟାକୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରିବା। ବିକଜ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଟିଭିରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେ ବି ରିଚାର୍ଜ ନ କରିପାରେ, ତ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ୟା ଫିର ଓଟିଭିର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରେ, ୟା ଫିର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରେ, ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତାର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ମୁଁ ସେଇ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିଦେବି। ଜାଣିପାରିବି ମୋ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଆୱାର ହେଇଗଲି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ 2 years ବ୍ୟାକ୍। ତାର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଭାଇଟାଲ ୟୁଜ୍ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ୱିଶ୍, ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଡ୍ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା, ସେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କମନ ହାଉ ୱିଲ୍ ନୋ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନ କଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍, ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ଦିନ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍
losses have been there. ना से आम लोक जानिले ताको टीवी चैनल वाला हमको टेलीकास्ट करले या फिर सोशल मीडिया मु सेटा वाच कली मु जानली कोन मो प्राइम मिनिस्टर कंसर्न अछि जे किसी भी नेचुरल कैलामिटी होछि मो ये माने मोर प्राइम मिनिस्टर कंसर्न अछि से रिगार्ड तेणुकरी मो प्राइम मिनिस्टर प्रति मोर गोटे ओब्लिगेंसी बढ़ीगला तो ये जिनस है गोटे पार्ट सेकेंड पार्ट हूँ कौन ना नरेंद्र मोदी जिते थर लकडाउन होती अध घंटा 20 मिनिट टीवी आसिक गोटे गोटे टक देकी जाती ना समस्ते से समय टक शुणुते बोली किसी ग्यारंटी नुह तो से टक को कौन है ना अगेन द वेब पोर्टल ऑफ दैट डिफरेंट न्यूज चैनल दे टेलीकास्ट थ्रू दैट वेब पोर्टल ना मु जेहेतु इंटरनेट यूज करूँ तेणुक मुझे देखिपारि मो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक देखिपारि या फिर कई जब मो सागे शेयर करते व्हाट्सएप ग्रुप में देखिपारि या फिर ट्विटर कई शेयर करते मुझे देखिपारि तो मुझे टीवी देखा मैंडेटोरी ना मो आजिका समय टीवी रू इनफॉरमेशन पाइबा जो मैंडेटोरी से नुह यू कैन गेट ऑल द इनफॉरमेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेबसाइट एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एनी काइंड ऑफ इंटरनेट सर्विसेज यू कैन गेट द ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ जो 2 लाख करोड़ रुपीज पैकेज जो आसला इंडियन गवर्नमेंट देला जो कोविड-19 अराउंड 2 लाख आई थिंक सो से जिनस केते को हेड रे खर्च हला आमे कॉमन पीपल जानिबा के दीटा उपाय हम पाखर अछि गोटे होची कोन ना जदि मु राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट को मागिबी गवर्नमेंट तार इन्फॉर्मेशन देबो तापा मते बहुत जिनस करिया पे पड़ो बट आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट यस जदि मु ताकू न करके आउ जदि किछि जिनस करिबी कोन कोन होई परियो ना मु वेबसाइट रे जदि अपडेट कर दियो गवर्नमेंट वेबसाइट रे से अपडेट किए होगा देन आई विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट 2 लाख करोड़ रुपीस इन्फॉर्मेशन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई विल गेट दैट now this is the thing why government use the social media platform now making the things transparent जिनस को ट्रांसपेरेंट करने निहाती दरकार दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कौन कर सोशल मीडिया एक्टिविटी को बेसी प्रोत्साहन कर देखिए नरेंद्र मोदी जिते प्राइम मिनिस्टर द ईयर ऑफ 2014 से समय बहुत गुड़े भाषण बहुत गुड़े जिनस से कौन कले बहुत जिन कले इवन जो रैली भी होता तो वर्चुअल रैली रे बहुत गुड़े पार्टिसिपेट कर वर्चुअल रैली रे से कौन वर्चुअल इमेज गला लोक मैंने बसले डिफरेंट स्क्रीन रे देखिले ग्रुप ग्रुप पीपल बसले व्हिच इज वेरी इंपैक्टफुल आउ गोटे इनफॉरमेशन मुझे दूसरी जब जानी मुझे भावुँ आप बहुत लोक जे यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप जितिला माने प्रीवियस इलेक्शन ता पछरे गोटे बेसिक रहस्य थिला सोशल मीडिया माने केते फैक्ट सेटा तो जाना नहीं बिकॉज तापर रिसर्च है नहीं कि तापर इन्वेस्टिगेशन है नहीं तो जहाँ कुहा होची जे सोशल मीडिया ही मुख्य जिनस थिला फॉर विनिंग ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ना से कौन है ना 2019 इलेक्शन बेले इंडियन गवर्नमेंट जो अच्छी आम आप जो इलेक्शन कमिशन सोशल मीडिया रे कौन यूजर को प्रोत्साहन करने प्रलोभन देवाई पैसा देखिए एक देखिए कौन डाटा ये करने टोटाल बैन कर कौन ये लोक मैंने कौन कहले आपंकर कौन पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया को यही हिसाब से गोटे पर्टिकुलर सेगमेंट रखिए से पर्टिकुलर सेगमेंट हिसाब से यूज करेंगे ना डाटा रिट्रीवल मैंने धरतु 2019 गोटे पिलार एज अच्छी 14 इयर्स तो नेक्स्ट इलेक्शन 2024 तो तार अच्छे 14 इयर्स 2024 बेलू तार 18 इयर्स ता डाटा को जब कौन गोटे पार्टी रखी सी इन्फ्लुएंस आराम से करें कहीं 4 वर्ष जाए आखि आगे सब आने गोटे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा गोटे पॉलिटिकल पार्टी गुरु सब देखिए 18 वर्ष जो भोट देव तो से पार्टी जाए भोट देव यही जिनस को मना कर डाटा चोरी हो पार ना तो या बहुत किसी जिन ओके ना गवर्नमेंट आउ गोटे जिन कौन कर आप रूराल एरिया आजिकल रूराल हो कि अर्बान एरिया हो सब लोक मैंने बहुत आवाज हो गले सोशल मीडिया को लेकिन इंटरनेट को लेकिन अर्बान एरिया जी वीडियो क्रिएट न हो देखिए आप रूराल एरिया से वीडियो हो
ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ और ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ସେମାନେ କଣ ସେଠି ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ ଉଠେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ହିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ବାଲିଆପାଳରେ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଯୋଉ କାମ କଲେ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭିଡିଓ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଭଦ୍ରକରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଲକଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ 7ଟା ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଶାଢୀ କିଣୁଥିଲା ସେ ଭିଡିଓ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ମାନେ ଆକ୍ସନ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ଆକ୍ସନ ହଉଛି କଣ ଆକ୍ସନ ହଉନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ to share the information with the common people because common people are actively use the social media. So ମୁଁ social media use କରିବି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଣ योजना କରୁଛି I can know easily. So that's why government using the social media for the common people's information. Now basically କଣ ହଉଛି ନା କୋଉ tool what tools are using very widely. Number one is the Facebook. ବେଶୀ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି Facebook ର। ଦେନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର, ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଦେନ୍ ଫଟୋ ସେୟାରିଂରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିକର। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କନଫର୍ମ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଫେସବୁକ୍ ଥିବ, ଟ୍ୱିଟର ଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। Flickr, I don't know whether how many people are using that or not in our country, I don't know. But yes, maximum people are using. But the first 3 are widely used in our country. तो तार यूजेबिलिटी कौन तार एडवांटेजेस कौन गोटे स्मॉल एग्जांपल मैं कहली जेंति हमर इंडियन गवर्नमेंट कौन करूछ ना सोशल नेटवर्किंग रो फायदा कौन जे दो लॉट्स ऑफ पीपल आर जॉइंड विद इन दैट सोशल मीडिया सो फाइंडिंग द पीपल गिविंग देम द इंफॉर्मेशन taking their feedback who are in trouble helping them it is very easy for us to find out the particular people and help them. Now Facebook is the another way how to help the people. Now in COVID-19 रे केस रे जो लोक घर जो हैरान रे पडुची कि कोन होउची से कोन करची गोटे वीडियो कला वीडियो शेयर कर देला तो शेयरिंग रो सब बेस्ट मीडिया कोटा either it is with the WhatsApp or it will be the Facebook. Now question सब फंडामेंटल मूल क्वेश्चन होउची कोन सोशल मीडिया रो ओवर इंटरनेट आवश्यक कोन था ना ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी आम मानकर सबुठू माने बिगेस्ट साइकोलॉजी है मो घर कौन होची आई एम नॉट एबल टू नो दैट मोर इंटरेस्ट भी नहीं मो घर कौन होची जानिया पे बेसिक जानिया पे ओडिसा घर कौन होची सॉरी ओडिसा घर कौन होची से विषय जानिया पे मोर बहुत इंटरेस्ट तो यही इंटरेस्टनेस को लेकिन सोशल मीडिया क्रिएशन है तो जिनस कौन है लोक मैंने कौन कले ना मो घर धर जो कहार कोटे कौन असुविधा है मुझे गोटे शेयर करदेली गोटे मोर व्यू गोटे शेयर करदेली ओवर फेसबुक तो मुझे शेयर करला मो सांग मैंने या कर मन भर फिलिंग्स आए मुझे भर जानी तार जानी मुझे धीरे धीरे कमेंट देवा स्टार्ट करदेली तो ये जिनस आमर सोशल मीडिया फ्रेंडशिप आउ एनिमीनेस ये सब जिन धीरे 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 बढ़ी बढ़ी चले तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया इज टू नो व्हाट हैपेंड टू अदर्स माइंड और अदर्स लाइफ हम सेटा जानिया बेसी इंटरेस्ट है ना कि आम लाइफ रे कोन होची सेटा जानिया पे इंटरेस्ट है तो सोशल मीडिया रे एटा होची डेवलपमेंट रे एटा होची मुख्य कारण हाउ सोशल मीडिया इज इवॉल्व अच्छा आपण माने फेसबुक रो इनिशियली जदी एडवर्टाइजमेंट देखिथिबे टीवी रे से जण कहथबो गोटे पर्टिकुलर लोकर ना कौन तो एबीसीडी कहीं देखिछ कि तो गोटे बिल्डिंग आगे कहब से बिल्डिंग से जन आउ जन कह आउ जन आउ जन कह आउ जन एमती गोटे नेटवर्क क्रिएट हो जो से पाइब से लोक आड्रेस कार्ड सब पाइब एंड पाखक जाकि पहुँचे आपड़ देखिए से एडवर्टाइजमेंट एक्जाक्टली सेम थिंग हैपेंड इन सोशल दैट इज द फिजिकल थिंग व्हाट दे हैव शोन इन द टेलीविजन आर्ट एंड दिस द लॉजिकल थिंग व्हाट करेंटली फेसबुक इज डूइंग तो आपण मैंने जब जानीपारे ताले देखिपारे जे फेसबुक सेया ही करते आपण मैंने गोटे वीडियो शेयर कले से वीडियो आउ जन कि आपको बिहाफ शेयर कला आउ जन कि शेयर कले भल लगे आउ गोटे तार डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सोशल मीडिया होची कोन ना लोक आपन डाटा नहीं कि पैसा इनकम करछन केमिति पैसा इनकम करछन
लेट्स से जनक घरे कहार गोटे देह खराब होती लेट्स से कैंसर जनक होती सी कौन कला एससीबी रे धरा एडमिट होती एससीबी रे एडमिट हो गला पर सी कौन कहती पिलाटी कौन कहती सोशल मीडिया वेल एक्टिवेटेड से गोटे स्टेटस मेंटेन करदेला जे माय ग्रैंडमदर अफेक्टेड विथ दिस सोर्स ऑफ कैंसर एडमिटेड एट एससीबी तो से जिनसा कौन कले मु सांग हिसाब पिलार सांग हिसाब मु वाच कली किंतु मो वाचटा एत इंपोर्टाट नुह इंपोर्टाट कहार ना मेडिसिन कंपनी फेसबुक रे डाटा चोरी करमती ना ये जो पिला जो शेयर कला से पिलार प्रोफाइल रू ता नंबर पाई पारंती ता मेल आईडी पाई पारंती ता ऑल डाटा भी ସେମାନେ रिट्रीव कर पारंती रिट्रीव कर सारा पर से कौन कले से पिला को कांटेक्ट करने चेष्टा कले कोथ कांटेक्ट करने चेष्टा कले मेडिसिन बिकिया आपण मैंने शुणुवे जो प्रिवियसली किसी मास पूर्व जो मेडिसिन जो केमोर रेट कमेवा ये सब जिन होता तो चिंता करंतु जदि गोटे केमोर रेट 15,000 कि 20,000 कि 25,000 लेट्स अच्छी एंड आपण मान पाख से पिला पाख एससीबी रे गोटे पर्टिकुलर लोक जाई पहुंची जाउछ विदाउट एनी इंटरप्शन से जाई पहुंची जाउछ आज्ञा आपनकर एमती असुविधा अछि केमो दरकार होतो 25,000 मार्केट रेट आपण जे दुकान रे बुझंतु मु आपन 20,000 देबी आपण देखले माने कोन 25,000 जिन मु 5,000 फायदा पर ठीक है 20,000 से भीतर मु चिंता कली से लोक मो भीतर जानिला को केमिति पाइला मो एड्रेस मो विषय जानिला केमिति एंड मते कहीं से केमो देला 20,000 टका 25,000 जिन आपण माने कोन भाबिले जेहेतु से मेडिकल कंपनी रो लोक तेको सी मते बिकुची ता जिंस तेको ता जो दुकान रो फायदा से अटके देकी से केवल तार कंपनी रो पैसा रे मते बिकि दे गले बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग से केमोर रेट 5,000 कि 4,000 टका हेतु मार्केट जो मुझे किणुची से 25,000 किणुची जदि कौन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मत बिकला से 20,000 बिकला से 20,000 बिकापी इनफर्मेशन पाइला को ना फेसबुक रू पाइला कहीं पाइला ना फेसबुक रो मु ही अपडेट करी मोर अपडेशन को लेकिन से जिनस पाइला अच्छा ये फायदा भी अच्छे लॉस भी अच्छे फायदा कौन ना मुझे 5,000 टकर फायदा पाइली लॉस कौन ना आग को से 20,000 को जदि मोर 4टा कि 5टा केमो दरकार हम सी 2 मास पर कह ना आज्ञा केमो रेट बढ़े 25,000 हो तो मुझे जेहतु से आनिक मो घरे दे जाऊँगी मु डॉक्टर को या मेडिकल कौन जगह देदेली मो काम खत्म मुझे विषय चिंता करें मोर से कौन चिंता ना मो पेसेंट केमी भल हो जाए 5,000 टका मुझे जमी बरम बिक्री करके था मोर से विषय चिंता नहीं जे 5,000 टका मोर से अधिका नहीं गल मोर से चिंता मो पेसेंट केमी भल हो जाए ये हूँ प्रोब्लेम तो सोशल मीडिया रे यदि आपनकर कौन से जिंस आपन शेयर करबे दैट मींस इट इज विजिबल बाय एवरी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एंड सेही कंपनी माने आपन मानको डाटा चोरी करन आपन माने धरा जो चिंता करन तो आपन फेसबुक रे सॉरी फ्लिपकार्ट रे कौन से जिंस किणुवा पे विजिट कले देखले 4-5टा जिंस देखले किनिलेनी बाहरी आसले तो सेम जिंस आपनकर फेसबुक रे केमिति अपियर हे जाय तो फेसबुक रे अपियर हुए दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग टेक्निक से मशीन लर्निंग टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनाबल सेटा आपन को बाध्य कराए बारंबार आपन साइट को आगो को आसले आपन से जिंस किनिबे इट इज फैक्ट एंड एटा को केही अटकै परिबे नै बिकॉज़ इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी नेवर चेंजेस हमें चाहिले भी चेंज करि पारे ना हम निज को कहना हमें एडिक्टेड हे जाउछे ये सब जिंस होते ठीक है देखिए मु एटा गोटे फेसबुक रो कथा कहली तापर आसला कौन ना माइक्रो ब्लॉकिंग विषय आम जो रोचे जोटा कि आम ट्विटर जो रोचे माइक्रो ब्लॉकिंग ये कहूँ बिकज सर्ट क्यारेक्टर भितर आम आम फिलिंग्स टाक एक्सप्रेस करुँ एंड से बहुत लोक पाक जाऊँ एग्जांपल आप देखु जो इंडियन रेलवे पीयूष गोयल या फिर जो इनिशियली स्टार्ट है बीजेपी गवर्नमेंट इंडियन रेलवे बहुत गुड नंबर माने शेयर कले जदि ट्रेन आपन असुविधा होती कि कौ टीटी आपको सीट देवाई पैसा डिमांड कर किसी गोटे इलिगल काम जब होने ये फोन कर जन एगेन तापर कौन है ना आपण मानकर रेलवे मिनिस्टर आपण मैंने जानले ट्विटर अकाउंट विषय जानले प्राइम मिनिस्टर को ट्विटर अकाउंट विषय जानले डिफरेंट स्टेट चीफ मिनिस्टर को ट्विटर अकाउंट विषय जानले इफ यू आर इन ट्विटर आपण मैंने देखा ना स्मॉल वीडियो गोटे शूट करदे ट्रेन भीतर से वीडियो टाक आप ट्वीट करके रेलवे मिनिस्ट्री को पठे पारे प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट करके टैग कर पारे समस्त टैग ना से देखिले जिनटा देखला पर कौन है ना जो करप्ट ऑफिसर होते एक्शन है जो एक्शन है कौन है ना से जो लोक जो थिला सी डरला जो मुझे जब किसी इलिगल काम करुच्ची लोक मान पाखे स्मार्टफोन समस्त पाखे अच्छे
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ତାପରେ ମୋ ଚାକିରି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଡରିଲେ, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେମାନେ ଡରିଲେ, ତେଣୁ କରପ୍ସନ୍ କମିଲା, କରପ୍ସନ୍ କମିଲେ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଗେଟ୍ ବେନିଫିଟେଡ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟରର ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ 8 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ that ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଟା ନ ଦେଖିବା ଭଲ। ତେଣୁ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାଟା ହିଁ ୱାଇଜ୍। ତ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ହେବ। ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ କରିବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ପାଇବେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ପାଇବେ। So it is another way to generating revenue by using the social media also. ଆଚ୍ଛା, କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଟ୍ୱିଟର ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଗମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି? Whereas you are getting advertisement in YouTube rather than you are not getting any kind of advertisement in WhatsApp, because WhatsApp ଆଉ Facebook ଆଉ YouTube କଥା ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି those videos are stored in the YouTube server. Now ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କୌଣସି ୱେବ୍ ସର୍ଭର ନାହିଁ ଯିଏକି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବ, ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ସେୟାରିଂର କିଛି ବି ମାନେ ତାର ସର୍ଭର ହିଁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ where your phone memory is used, where your phone memory is not used. ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମେମୋରି ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ବଟ୍ whenever you are using WhatsApp your phone memory is 100% used anything। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫୋନ୍ର ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ସ୍ପେସ୍, ତ କେଉଁ ଆପ୍ର କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କି ଅଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଥରେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। So that is the thing here in WhatsApp, in YouTube and in your Facebook. Facebook ବି ତା ନିଜର ସର୍ଭର ୟୁଜ୍ କରେ। ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସର୍ଭରରୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଚ୍ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ WhatsApp ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ WhatsApp ଭିଡ଼ିଓ whenever it is downloaded to your phone memory, then ever you are able to watch. Without download in your phone memory you will not be watched. ଟ୍ୱିଟର ବିଷୟରେ ତ କିଛି କିଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ କହିଲି କେବେ ତିଆରି 2005ରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। 2005ରେ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀରେ ସେଟା ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କଲା, ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ସେ ସେପାରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିନେଇଥିଲା 2005 ଫେବୃଆରୀରେ। ନାଉ ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେଗମେଣ୍ଟ। ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ଫ୍ଲିକରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟିଂ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ନା, marketing is giving the idea of your product to different people or different segment of people. now ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ BMWର କ୍ୟାଟଲଗ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖକୁ ଯିବେନି ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କିଣନ୍ତୁ ବୋଲି। या फिर ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି 4 to 5 ଲାଖର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଅମ୍ବାନୀ ପାଖକୁ ଯିବେନି ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କିଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ପିପୁଲକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଇ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କରିବେ କେମିତି? ତ ସବୁଠୁ ଡାଟା ପାଇବାଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡାଟା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଡାଟା ପାଇବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୱେ ଇଜ୍ ଦ
Facebook, whatever, and this social media. Now, the social media रो अपन डाटा नेबे जे मु पूर्व आपन कहतली जे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गोटे फैमिली रो जे हेड है जनरली से माने नियम एंड जनरली हेड जो माने थांजे से मानकर एज है बिटवीन 30 रो 50 भीतर एज है 60 भी धरि नो से ग्रुप रो पीपल माने तो अपन हिट करे ना घरे गोटे गाड़ी किना हबो केबे गोटे 15 वर्ष पिला को कि 14 वर्ष पिला को कुआ हबन जे को गाटा किनिया बापा को कह रादर देन से पिलार बापा ही डिसीजन हम जो मो बजेट है मो बजेट हिसाब से गाड़ी किनले मत सुट कर ना आपन जानिले ए लोक गाड़ी किनने को इंटरेस्ट ना जानिबे सेमिति ना आजिकल लोकंकर गोटे ट्रेंड अछि आई एम विलिंग टू बाय ए व्हीकल प्लीज सजेस्ट व्हाट व्हीकल आई शुड बाय विदिन दिस रेंज लेट्स से 5 लाख टू 10 लाख बजेट भीतर व्हिच व्हीकल इज बेस्ट ना ए इन्फॉर्मेशन गाड़ी कंपनी वाले चाहते हैं सेमान पाखु पहुंचे इन्फॉर्मेशन तापर आपण माने देखिए केते फोन कॉल दिबो केते मेसेज दिबो केते मेल जीव आपन को मेल आईडी एई सब जिंस होला परे आपण माने फिजिकली विजिट भी करि परंते आपण नंबर कांटेक्ट नंबर नै कि आपण ऑफिस हो आपण घर हो कोठी विजिट करिवे विजिट कला परे आपण माने को से तांको प्रोडक्ट रो मेरिट विषय नै कहबे जदि आपण को से प्रोडक्ट विषय कुछ आईडिया अछि देन यू विल टेल द डिमेरिट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑलवेज से माने आपण को मेरिट विषय कहले चेष्टा करी आपण को गाड़ी को बिक्री करिवे तो आपण इन्फ्लुएंस चले ता कथा रे तो जेहेतु आपण गोटे माने आवर कस्टमर तो आपण देखले कोन ये सिना कहि देबला लेट्स निशान वाला आके मते कहि देला लेट्स मु ते मारुति सुजुकी रे जाई के कम्युनिकेट करी ताकर एई सेगमेंट को गाड़ी भलो गाड़ी अछि ना मु गली मारुति सुजुकी मु गली किबा मु फोन करे सेमान ताको पर्सनल पठले उधर कैटलॉग पठे देला पर मु ताको देखि देली तो फिर अगेन मोटे मन हले ना मारुति सुजुकी वाला हुंडई करती हुंडई एमती 5-6टा कंपनी मु बुझी सारा पर ना मु किनिबी तो मो निज चॉइस किंतु जिंस जे मते इन्फ्लुएंस किए करोछ को कंपनी रो पर्सन मते इन्फ्लुएंस करोछ ना गोटे भलो मार्केटिंग पर्सन किए जे हिमालय रे जाई कि आपनकर चीज बिक्री कर पारो से हला गोटे भलो मार्केटिंग पर्सन ना जदी आपन गाड़ी खराब तथापि आपन को जदी जने बिक्री करे देला ताहले से लोकटे गुड सेल्स पर्सन तो मार्केटिंग इन सोशल मीडिया रे तो आपण गोटे गाड़ी भी सर्च कले देखिले ना सेमान कोन करे ना आपण को अकाउंट को से गाड़ी रो फीचर वाला से गाड़ी रो इमेज बहुत जिंस आपण को अकाउंट ऑटोमेटिक हिट ही आसी आपण बाध्य होई कि से गाड़ी की कोन करिए निश्चिंत कोरी करिवे से गाड़ी विषय जानिया ना इट इज वन टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना तापर नेक्स्ट जिंस होची आपण ने चिंता देखंतु वर्तमान इंडिया रे ऑनलाइन बिजनेस जो ई कॉमर्स कहते हैं दैट इज रैपिडली ग्रोइंग तार ग्रोथ ऊपर बहुत बड़े फैक्टर काम करे नंबर 1 फैक्टर इज द सेफ्टी ऑफ योर मनी आपण मानकर पैसा सेफ अछि ना नहीं सेटा जानिया दरकार जदि सेफ अछि ताले आपण माने निर्द्वंद ऑनलाइन मार्केटिंग करि पारे प्रथम कथा सेकंड थिंग होची जे आपण को 24/7 एक्सेसिबिलिटी मिलुची आपण राति 2टा रे कोन से प्रोडक्ट देखिया पे चाहछंती आराम से आपण देखि पारे किंतु फिजिकल मार्केट रे राति 2टा रे आपण जिंस देखि पारे नाही एंड आउ तो डिफरेंस होछ कोन ना लॉजिकल मार्केट रे फेसबुक हो कि आपण तो स्नैपडील हो कि अमेज़न हो सेति आपण माने कोन करछन ओनली जिनिस देखुछंती ताको फील करि पानी व्हेयर इन फिजिकल मार्केट रे आपण देखिबे भी फील करि पारिबे एंड आउ गोटे एडवांटेज हो कि डिफरेंट 2टा जगह कथा कहूची आपण माने गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्समैन जो पचारुछंती सेल्समैन 10टा प्रोडक्ट विषय पचारले सेल्समैन विरक्त हो जाउछ किंतु आपण ऑनलाइन मार्केट रे आपण 50टा प्रोडक्ट विषय जानिया पे चाहे ता तळे ता डिस्क्रिप्शन अछि आपण केही विरक्त होबानी केही जानि आपण आराम से देखिए किनिए बुझिए ना सेही जिंस आपण ग्रेजुअली जते विजिट करूछंती देखुछंती जानुछंती ग्रेजुअली आपण मानकर सेही प्रोडक्ट विषय नॉलेज बढ़ुची नॉलेज बढ़ला पर आपण विल करछन जिंस किनिए अच्छा केमी काहे कि होची फ्लिपकार्ट में काहे कि जिंस किनुची ना मु देखिली व्हेनेवर आई एम बाइंग ए लेट्स से टेलीफोन और स्मार्टफोन even a smartphone I am willing to buy from Flipkart. Let's say it is 10,000 in Flipkart, but in physical store it is 11,000. Generally है कहीं के एटा हुए कहूँ या रीजन ता कौन जो फिजिकल स्टोर कहीं भी तार 1000 टका बढ़ी जाए तो मु कौन कली ऑनलाइन किन देली किन सारी प्रोडक्ट मो पर डिलीवरी हो गला डिलीवरी हो गला पर तार रेस्पॉन्सिबिलिटी सब नहीं था फ्लिपकार्ट
डेलीवरी हबार से 15 दिन या 20 दिन या 30 डेज जाए रिप्लेसमेंट ग्यारंटी भी दिखती जदि मोर प्रोडक्ट भल मत लगे कि प्रोडक्ट खराब बाहर मुझे सागे सागे रिफंड करी रिफंड एगेन्स्ट मु मोर पैसा को भी मैंने नहीं आसपारी मो अकाउंट ये ऑप्शन रोचे बट व्हेयर आपण मैंने जब से फोन को जब फिजिकल मार्केट में किणुंट आपण फोन जब खराब है से फोन नहीं सजेगी आपको देवे कि आप फोन फेरे देती मतलब पैसा दिंतु से पैसा देवे ना ना ये है आ गोटे बेनिफिट ऑनलाइन मार्केट तो ऑनलाइन मार्केट में जिन किणुची मु बेनिफिट रोचे जे मो पैसा जब मु फेरिया जिन फेरु तो मो पैसा मुझे फेरी पाइबी बेस्ट थिंग इज दैट ना जो एबे मु कहली जे एमआई रो फोन कहीं फ्लिपकार्ट 10,000 मिलूँ कहीं ऑनलाइन सॉरी फिजिकल मार्केट में जो किणुची से 11,000 व्हाई आई एम बाइंग दैट मझीरे प्रोडक्शन देन डिफरेंट लेवल है कि कस्टमर पाखु आसे डिफरेंट लेवल ले दे पिक देयर कंट्रीब्यूशन चार्जेस and the customer pays for those contribution charges. That's why the price increases 1,000 rupees. So here what happens in Flipkart, the product directly comes from the factory, from the MI office to the Flipkart store. Now directly in the Flipkart मझीरे जो लोक रखुते परसेंटेज रखुते से लोक रही that's why pay 1,000 rupees मु लेस रे पाइली खुद Flipkart. So that is the main beauty of using online marketing. Sorry, online buying and selling the thing. Now, next thing होची खाली फ्लिपकार्ट वाला फ्लिपकार्ट रे देखिबे से जिन सुनो किछटा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली किछटा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर रे अवेलेबल रहउछ से ऑनलाइन स्टोर मान पर से प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वन प्लस रो एक्सक्लूसिव स्टोर होची आपन देखिबे Amazon एमआई रो एक्सक्लूसिव स्टोर होची आपन देखिबे फ्लिपकार्ट तो आपन जदि वन प्लस रो कौन जिन किनुचंती ताले आपन Amazon रे and comparatively कम रेट रे पाइबे दैट डज नॉट मीन दैट वन प्लस रो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट रे मिलिबो नाही मिलिबो किंतु लेट्स से रिसेंटली गोटे मोबाइल लॉन्च हेची से रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट यू विल नॉट गेट इन इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट यू विल गेट इट फ्रॉम ओनली Amazon because they have the dealing with the Amazon जहाँ लॉन्च हो ए थ्रू रे हमें 5 months और 6 months ए थ्रू बिकिबो फ्लैश सेल जोटा कहूँ आपण मैंने ये जिन को एक्सपीरियंस करिथिए बहुत समय फ्लैश सेल केमिति होची तो से माने कोन अगेन ए फ्लिपकार्ट और Amazon एमाने भी सोशल मीडिया को बहुत माने इन्फ्लुएंस करूछंती तांकर प्रोडक्ट बिकिया पे अच्छा आपण मैंने आउ गोटे प्रोडक्ट विषय में कहूची बिलियन गोटे प्रोडक्ट आछि आपण मैंने देखिबे सेटा होची आपनकर काहार कहले फ्लिपकार्ट रो गोटे प्रोडक्ट बिलियन इज ए कंपनी किंतु बिलियन एडवर्टाइजमेंट आपण मैंने कोठी देखि नथिबे बिलियन आपण देखि एसी आसुची बिलियन रेफ्रिजरेटर आसी बिलियन माने आपनकर छुआ पिलांकर डायपर भी आसुची ये सब जिन बहुत प्रोडक्ट आसुची तो बिलियन कौन कला जो मु मार्केटिंग करै पारु नै तो बिलियन कौन कला फ्लिपकार्ट सागे टाई अप कला फ्लिपकार्ट कला मु तो जिन सब बिकेबी ना दिस परसेंटेज मोर हो ठीक है ओके तो फ्लिपकार्ट बिलियन कंपनी रो प्रोडक्ट ता साइट थ्रू रे बिक्री कला से कुछ परसेंटेज से तार रखला बिलियन कंपनी भी खुश फ्लिपकार्ट भी खुश कस्टमर भी खुश है ना रेट कम है कस्टमर पहला से खुश फ्लिपकार्ट बिके देला तार परसेंटेज से पहला फ्लिपकार्ट भी खुश बिलियन प्रोडक्ट बिक्री होनता बिक्री हे पहला से भी खुश तो तीनटा जाक सेक्टर रे तीन जन खुश एमि बहुत जिंस अछि आपण माने देखियो जो प्रोडक्ट रो जो कंपनी ना सुनते से सब कंपनी गुडा फ्लिपकार्ट रे अवेलेबल रहउची या फिर आपण मानकर ये Amazon रे अवेलेबल रहउची से कंपनी होची लोकल कंपनी जो माने तांकर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक से करि पारु नांती कि ठीक से होउनी तांकर जेती से माने एई सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर दोछन टू सेल देयर प्रोडक्ट ना ये सब जिनस होची आपण माने केमिति कोन करि परिबे बाय यूजिंग द सोशल मीडिया इन द फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी रे बहुत जिनस आपण यूज करि परिबे एंड बहुत जिनस करि परिबे सोशल मीडिया थ्रू रे ओके थैंक यू वेरी मच सर आज एतिक थाओ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस ओके ओके तो सर आम पाखे मात्र 2 जन लर्नर थिले पूर्वर भल थिले मे भी किसी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम किंबा कौन प्रॉब्लम पाई पिला थिले एबे 2 जन पिला भी कटि गले तो बढ़िया हला तो एबे तो आम पाखे क्वेश्चन भी किसी नाही पिला दियन
chat रे दियंती तो ताहले क्लास टी को आज एठी भी रखिबा मो भी चाहूची आज्ञा ओके थैंक यू सर वेरी इन्फॉर्मेटिव session very wonderful really social media केमती काम करूची जोटा कि आमे किछि जानी थिले एवं बहुत सुंदर भाबरे भी मो सेशन टी को सुनिली रियली वेरी माने वंडरफुल सेशन सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर okay Nishant thank you and today our session is now completed here Okay, sir.